Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss nucleus. So let's move to the class board. So dear students, nucleus, one of the most important topics of this chapter, very important topic. Nucleus, the control center of the cell, which controls all the life activities. So first of all, its discovery. Dear students, who discovered nucleus? हमने इस चैप्टर के शुरू में इसको डिस्कस किया था एंड द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी फॉर्मुलेशन इस टॉपिक के अंदर. सो न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown in 1831. क्लियर? तो ये दोनों MCQs आपने याद रखने हैं. किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन. और कब किया? 1831 में. Now, its location. So as far as its location is concerned, in animal cells, and in plant cells. So as far as the animal cells are concerned, the nucleus lies in the center of the cell. Clear? Means it is central, while in the plant cells, the nucleus is pushed to the thin peripheral layer. Peripheral का मतलब होता है away from the center. ठीक है? So peripheral layer, और किस वजह से? हम पहले पढ़ चुके हैं. Due to the presence of large central vacuole. क्लियर? और ये हम बात कर रहे हैं एक मैच्योर प्लांट सेल की. यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स आपसे शेयर करता चलूँ. इन न्यूली फॉर्म्ड plant cell, the nucleus is central. जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है उसमें सेंट्रल ही होगा, बिकॉज द न्यूली फॉर्म्ड सेल उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता. लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, उसकी जो ग्रोथ की स्टेजेस चलती हैं आगे, तो सेंटर में वैक्यूल बनना शुरू हो जाता है बड़ा सा, by the coalescence or by the fusion of the small other vacuoles. तो उसमें वैक्यूल के अंदर इसको डिटेल से डिस्कस भी किया था, और एनिमल और प्लांट सेल का जो डिफरेंस हमने किया था उसके अंदर भी इसको डिस्कस किया गया था. So that was about its location, which is concerned with the animal and plant cells. Clear? Now,
types of cells on the basis of number of nucleus or nuclei. Okay? Nucleus is singular and nuclei it's plural. So there are three main types of cells on the basis of the number of nucleus, the mononucleated cells, the binucleated cells, and the polynucleated cells. So these are the three types of cells on the basis of number of nucleus. So if there is one nucleus per cell, this is called as a mononucleated cell. For example, a typical plant cell or amoeba. Yeah. So just 1 to 2 examples are enough in order to complete their examples. Number 2, the binucleated cell. Bi means 2. So the 2 nuclei, यहाँ पर हम न्यूक्लियस नहीं कह रहे, न्यूक्लियाई कह रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियाई दैट्स अ प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस पर सेल. एक सेल में अगर दो न्यूक्लियाई हों, दो न्यूक्लियस मौजूद हों, सो उसे कहते हैं बायोन्यूक्लिएटेड सेल. फॉर एग्जांपल इन पैरामीशियम, आगे चलकर पढ़ेंगे, इन सीलियर्स, तो पैरामीशियम इनके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं. They consist of macronucleus and micronucleus. इंशाल्लाह उस चैप्टर में डिटेल से इसको स्टडी करेंगे. सो पैरामीशियम, it is the example of a binucleated cell or the dikaryotic hyphae in fungi. Dikaryotic, जिसमें दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं. Clear? Now the polynucleated, more than 2 nuclei per cell are called as polynucleated cells. And for example, that is giant amoeba. Clear? That is Pelomyxa palustris, that is a multinucleated, and the feeding stage of Plasmodium. Feeding stage of Plasmodium, that is basically a fungus. Clear? Inshallah, in chapter number 7, we will discuss both of these, and also the skeletal muscle cell, which is also called as muscle fiber. So these are the few examples as per the types. Now, dear students, we will move on to the components of nucleus. So
So as far as components are concerned, first of all, we will see what is nucleoplasm. So it is basically the soluble sap of nucleus, or the cytoplasm of nucleus is called nucleoplasm. It might be asked in the short question, what is nucleoplasm? Differentiate between cytoplasm and nucleoplasm. क्लियर? तो साइटोप्लाज्म हम पढ़ चुके हैं. तो जो न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म यानी जो उसका जो सोल्यूबल सैप होता है उसको हम कहते हैं द न्यूक्लियोप्लाज्म. इट कंसिस्ट ऑफ enzymes. It consists of the chromatin. It consists of ribosomes, clear, etc., etc. Now, there are four major components. There are four major components of the nucleus. The first one is the nuclear membrane. Or which is also called as nuclear envelope. The nucleus is covered by two membranes, means it is a double membrane bounded organelle here. Two membranes. Outer nuclear membrane, the outer nuclear membrane is continuous with GDS स्टूडेंट्स. हम पढ़ चुके हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके साथ अटैच होती है, इट इज किसके साथ कॉन्टिन्यूस होती है. यस, यू आर राइट, विद रफ एंडोप्लाज्मिक reticulum, clear, while the inner membrane, the inner nuclear membrane number two, the inner nuclear membrane holds the contents of nucleus. क्लियर? तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी है उसका जो सॉल्युबल सैप है उसके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, all these are enclosed by the inner nuclear membrane. And dear students, there is another term over here, that is nuclear envelope. So the outer nuclear membrane plus the inner nuclear membrane are collectively called the nuclear
एनवेलप। क्लियर? तो जैसे आपने एनवेलप देखे उनके दो लेयर्स होती है, ठीक है। तो इसी तरह से चूंकि इसके ऊपर भी दो लेयर्स होती है, डबल मेम्ब्रेन है, सो इसको कलेक्टिवली इनर और आउटर को मिला के कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। नाउ another terminology is there, the nuclear pores. Clear? The outer nuclear membrane and the inner nuclear membrane are continuous at some points forming a pore called a nuclear pore. Clear? तो जहाँ पर ये आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इन कांटेक्ट आ जाएंगी, मीन जो कॉन्टिन्यूस हो जाएंगी, वहाँ पर एक सुराख बनेगा, उस सुराख को या स्पोर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। लाइक दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड हियर दे बिकम इन कॉन्टैक्ट। दिस इज outer membrane and this one is the inner nuclear membrane. Clear? And here is the nuclear pore. Dear students, the shape, the nuclear pores have definite shapes for the purpose of controlling traffic of substances between nucleoplasm and the cytoplasm. Clear? मतलब इनकी डेफिनेट शेप होती है और डिफरेंट शेप्स के ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और जिस तरह का मटेरियल इनमें से पास होगा उसी तरह की इनकी शेप अल्लाह ताला ने बनाई है। नाउ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, the number of nuclear pore, it varies in various cells, it varies in various cells. For example, इनके नंबर जो है वो डिफरेंट होता है मुख्तलिफ तरह के सेल्स में। For example, in undifferentiated cells, undifferentiated cells किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? Which have the ability to further divide. ऐसे सेल्स जो मजीद अभी डिवाइड हो सकते हैं उनको हम कहते हैं undifferentiated cells. और for example, the egg cell have up to 30,000 nuclear pores. ठीक है, इसके अंदर कितने मौजूद? Up to 30,000. And as far as the differentiated cells are concerned,
डिफरेंशिएटेड सेल जो स्टूडेंट उस सेल को कहते हैं जो मजीद एक तो डिवाइड नहीं होगा और उसका एक प्रॉपर फंक्शन उसको अलॉट हो चुका होगा, ठीक है। सो इन डिफरेंशिएटेड सेल्स फॉर एग्जाम्पल RBCs that stands for red blood cells, which are also called as erythrocytes, clear, have 3 to 4 nuclear pores, ठीक है, पर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 3 से 4 होते हैं। जो डिफरेंशिएटेड सेल होगा उसमें इतने हैं आमतौर पर, ठीक है। और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल की बात की, जैसे एग सेल, तो उसमें 30,000 तक जो है वो न्यूक्लियर पोर्स मौजूद हो सकते हैं। और इन न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, दैट इज जस्ट टू कंट्रोल द ट्रैफिक बिटवीन द न्यूक्लियर प्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, ताकि उनमें से चीज़ें गुजर सकें। इनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं ताकि मुख्तलिफ तरह के जो सब्सटेंसेस हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकें, क्लियर। सो दैट वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करेंगे न्यूक्लियस के टॉपिक को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।